Hello friends, welcome to Jaji Defense Warrior. Today we're going to start the second half of biology first chapter. Okay, so we start from the hierarchy of the classifications. We done tomorrow. बैक डे हमने ये चैप्टर ये किया था hierarchy of classification. यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमने. आज शुरू करते हैं characteristics of five kingdom. Okay. So the first characteristics, first we're going to start about the kingdom Monera. So there are unicellular prokaryotes. Unicellular means a single cell. Okay. Prokaryotics, the organism lack a true nucleus. मतलब जो मोनेरा किंगडम होता है इसमें जो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं वो नहीं होते हैं. ठीक है. दे मे नॉट कंटेन अ सेल वॉल. मीन्स जो मोनेरा होते हैं उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेल्स होते हैं, सेल वॉल, एंड कुछ में नहीं होते हैं. सो दैट्स वाई हमने ये यूज़ किया है कि दे मे नॉट कंटेन सेल वॉल. ठीक है. द फोर्थ पॉइंट इज दे मे बी हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. मतलब वो या तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं या तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर्स में. ओके. और जो मोनेरा के एग्जाम्पल्स हैं, द बेस्ट दैट वाज द बैक्टीरिया एंड काइनोबैक्टीरिया. सो क्लियर. हमारे पास मतलब जो मोनेरा किंगडम होता है वो तो फर्स्ट पॉइंट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज सेल वॉल नहीं होते. द फोर्थ पॉइंट इज दे आर हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक. एंड द फिफ्थ that was the example of kingdom Monera is bacteria and cyanobacteria. Okay. The second kingdom Protista. So let's discuss about the kingdom Protista. Okay. जो kingdom Protista होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है एंड कम अंडर इन ग्रुप्स. और जो यूनिसेलुलर होने के बाद से ये ग्रुप्स में आता है. ठीक है. दे एग्जिबिट एंड ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके. देन दे शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिप्यूटा सीलिया फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन. मतलब जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है वो एक प्रोसिप्यूटा. ओके. द किंगडम प्रोसिप्यूटा दे शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोसिप्यूटा सीलिया आर फ्लैजिला फॉर द लोकोमोशंस. मीन्स द प्रोसिप्यूटा प्रोटिस्टस यूज फॉर द लोकोमोशंस, प्रोसिप्यूटा सीलिया एंड फ्लैजिला. इट्स ओनली फॉर द लोकोमोशन. मतलब मूवमेंट के लिए यूज़ होता है. लोकोमोशन मतलब मूवमेंट. एंड द एग्जाम्पल और जो प्रोटिस्टोपीटा का एग्जाम्पल है दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम. ओके. सो द थर्ड वन ऑफ द फाइव किंगडम इज फंजाई. ओके. देर फंजाई इज मल्टीसेलुलर. फंजाई हमारा जो मल्टीसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है. मतलब जो हमारा फंजाई है एक तो मल्टीसेलुलर है और एक द सेकेंड है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. ओके. They possesses and saprophytic made of nutrients which involve chemoheterotropic extracellular digestions. मतलब जो हमारा फंजाई होता है, that was a saprophytic mode of nutrients which involve chemoheterotropic extracellular digestions. Means chemoheterotropic. Heterotropic means self and chemo inside. Okay. And extracellular digestions. And the third point is the cell wall in this organism is made up of chintins. Means the kingdom fungi have cell wall which is made up of
chintins, which is made up of chintins. Cell wall made up of chintins. Okay, they live in a symbiotic relationship with blue green algae. Means symbiotic relationship, it's directly. So fungi have the symbiotic relationship with blue green algae. Okay, symbiotic relationship means they depends on each others. They depend on something others. Means I explain you this in simple word. मतलब मैं आप पे डिपेंड हूँ, आप मेरे पे डिपेंड हो. मुझे आपसे खाना चाहिए, आपको मुझसे पानी चाहिए. ओके, सो symbiotic relationship is depending on each other. Okay, then the example of fungi is yeast and asparagus. Okay, the fourth point is kingdom plantaria. So what was kingdom plantaria? Kingdom plantaria is also multicellular and eukaryotic organism. The cell wall is made, मतलब जो kingdom plantaria का cell wall है, it is made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose. Okay, kingdom plantaria is heterotrophic and perhaps their own food by means of the photosynthesis. Kingdom जो plantaria है, ये तो heterotrophic होता है and they prepared their own food with the help of photosynthesis. Okay, kingdom plantaria is subdivided into 5 parts. जो kingdom plantaria है वो अलग 5 parts में divided है. That was thallophyte, bryophyte, tetraphytes, gymnosperm, angiosperms. Okay, so these are the 5 types of kingdom plantaria, and the example of kingdom plantaria is pinus ferns, palm trees, mango trees, etc. and etc. Okay, so the next one is kingdom Animalia. Kingdom Animalia is also a multicellular, it's also a eukaryotic organism, but they do not shows the presence of cell wall. मतलब जो हमारा किंगडम प्लांटेरिया एनिमेलिया है वो मल्टीसेलुलर है. ओके, it's a multicellular eukaryotic, but they do not have cell wall. Okay, so kingdom Animalia do not have cell wall. Okay, they are heterotrophic or organism who cannot prepare their own food. मतलब heterotrophic, it's a heterotrophic and they also cannot prepare their own food by themselves. Okay, they depend on others, they depend on the fruits, they depend on the animals and other things. Okay, both simple and complex organisms are seen in this group and it is very broad group of organism. मतलब जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है एक तो बहुत या तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से के ग्रुप से बना हुआ है. ओके, एंड इट्स अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी, very broad categories. Animals have lots of category, lots of divisions. Okay, the organisms are genetically diverse. जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली डाइवर्स्ड है. जेनेटिकली डाइवर्स मतलब हमारे जीन्स डिफरेंट है, हमारे जेनेटिक्स डिफरेंस है. ओके, एंड ये डे बाय डे चेंज होते हैं. They exhibit an organ systems level of organizations. Animalia have organ system and level of organization. मतलब जो हमारे एनिमिलियाज हैं वो ऑर्गन सिस्टम भी कैरी करते हैं. कैरी इन द सेंस कि हम ऑर्गन सिस्टम से बने हुए हैं. सेल्स, टिश्यूज, सेल्स, देन organs, then body parts. This is the thing. Okay, it is subdivided into different phyla such as Porifera, Coelumbstrata,
Echinodermata, Chordata, and Annelids. So the kingdom Animalia is further divided into 5 parts: Porifera, Colintratas, Echinodermata, Chordata, and Annelids. Okay, so these are the 5 parts, and the example of kingdom Animalia are earthworms and hydras. So this all about the chapter diversity in living worlds. Okay, in next video we'll discuss the questions which are important for the exam. Okay, thank you, and take it as a brief and study it 1, 2, 3 times as much you can study. Thank you. Have a nice day.